यू हियर दिस वर्ड्स मेनी टाइम कि आप लोगों ने अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिली में, अपने स्कूल में से वर्ड तो सुना होगा कि भाई एडजस्ट तो करो. देन व्हाट इज द मीन्स ऑफ दैट एडजस्टमेंट? व्हेन एनी इंडिविजुअल टू फिट himself and the herself compromise from the situations. Next is the modify the needs and arrange the things, arrange the situations in a proper sequence. Then it is known as the adjustment. एडजस्टमेंट क्या होता है? जब हम कोई भी इंडिविजुअल कॉम्प्रोमाइजेशन करता है, अडॉप्ट करता है, किसी भी चीज को एक्सेप्ट करता है, इसके अलावा अपने आप को फिट, एडजस्ट, suitable, whatever, then it is known as the adjustment. So adjustment is the between, whenever we make the adjustment between the two things, जब कोई भी इंडिविजुअल दो सिचुएशंस के बीच में, किसी भी एनवायरनमेंट के बीच में, किसी भी कंडीशन के बीच में, किसी भी लाइफ के एरियाज के बीच में अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करता है या अपने आप को फिट करने की कोशिश करता है, एक सूटेबल कंडीशन डेवलप करता है, अपनी नीड्स को मॉडिफाई करता है, then it is known as the adjustment. So these all are about the general introductions of adjustment. Second is definition of adjustment. Adjustment is the process through which a person try to maintain balance between his requirements and the different life situation. When any individual is try to maintain between life situations and the needs, when any individual is try to maintain between the try to maintain the balance between the needs and the लाइफ की जो डिफरेंट टाइप्स की सिचुएशंस हैं या लाइफ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बीच में जब कोई भी इंडिविजुअल एडजस्ट करने की कोशिश करता है या बैलेंस को मेंटेन करता है, देन इट इज नोन एज द एडजस्टमेंट्स. या वी कैन से एडजस्टमेंट इज द interactions of the individual, interactions between the person and the environment. When any individual is interact from himself and his or her environment, जब कोई भी इंडिविजुअल अपने एनवायरनमेंट से और अपने आप सेल्फ से अपनी नीड्स को इंटरेक्ट करता है, देन इट इज नोन एज द एडजस्टमेंट. यानी कि जब एडजस्टमेंट क्या है? एडजस्टमेंट इज द इंटरेक्शंस between the individual and the environment. Yeah, we can say adjustment is the process through which individual try to maintain the balance between the needs and the different life situations. जब कोई भी इंडिविजुअल लाइफ की नीड्स के बीच में और लाइफ की सिचुएशन के बीच में और अपनी नीड्स के बीच में एक बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश करता है या अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है, अपनी नीड्स को मॉडिफाई करने की कोशिश करता है, then it is known as the adjustment. So next definition is it is the establishment of the satisfactory relationship between in a harmonious manner, conformance manner and the adaptation manner. The next definition is it is the continuous process in which individual change his behavior to produce the harmonious relationship between himself and the environment. जब कोई भी इंडिविजुअल अपने बिहेवियर को अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को, अपनी रिलेशनशिप को चेंज करता है, then it is known as the adjustments. So adjustment is the psychological survival. Without adjustment, individual cannot survive in the environment. Yeah, we can say without adjustment, modification of the needs, suitability, individual cannot adjust in the environment. So we can say adjustment is the psychological survival. So we discussed about the introduction, second is the definition, third is the nature of adjustment. First is it is a harmonious relationship between the individual. सबसे पहले एक चीज हमको ये समझना है कि जो एडजस्टमेंट होता है इंडिविजुअल के बीच में, एनवायरनमेंट के बीच में, उसकी नीड्स के बीच में, इन सब के बीच में जब कोई भी इंडिविजुअल अपने आप को फिट करने की, नीड्स को मॉडिफाई करने की, एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है, तो इट इज नोन एज द एडजस्टमेंट. नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ द एडजस्टमेंट. फर्स्ट नेचर इज इट इज द हार्मोनियस रिलेशनशिप between individual, their needs and environment. यानी कि इंडिविजुअल ट्राई टू मेंटेन द रिलेशनशिप between the needs
environment and individual also. So individual modify the needs in day to day life. We accept, we face many challenges. हम डेली लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंज को फेस करते हैं, चाहे वो आपके प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, लाइफ हो, सोशल रिलेशंस हो, कस्टम्स हो, ट्रेडिशंस हो, वैल्यूज हो, हमारे मोरल्स हो, एनीथिंग। इन सब में हम डेली कुछ ना कुछ चैलेंजेस को फेस करते हैं। देन इंडिविजुअल ट्राई टू मेंटेन द रिलेशनशिप बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड देयर रिलेशनशिप। तो फर्स्ट नेचर इज क्या है? इट इज मेंटेनिंग द हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन द individual, environments and their needs first. Second is it is the satisfactory adaptation to the demand of day to day life, यानी कि it is the adjustments के द्वारा individual will help the individual to change the way of the life according to the demands of the situations. According to the demand of the day to day life, individual adjusts to himself and herself, यानी कि हमारी लाइफ की डेली कुछ ना कुछ डिमांड्स होती हैं, कुछ ना कुछ सिचुएशंस होती हैं, उनमें इंडिविजुअल अपने आप को एडजस्ट करता है। इससे एक छोटा सा एग्जांपल है जो कि रिसेंट सिचुएशन पर बेस्ड है। आज के समय हम कोरोना वायरस के लिए सरकार ने बहुत, इंडियन गवर्नमेंट्स ने और WHO के द्वारा बहुत सारी गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं। इट इज द मेन चैलेंजेस ऑफ द इंडिविजुअल इन दिस सिचुएशंस। गवर्नमेंट बता रही है कि जैसे कि अलग अलग भारत के सभी राज्यों में लॉकडाउन कर दिए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा गया है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन के लिए कहा गया है। इट मीन्स इट इज द challenges and how to adjust, how to satisfy, how to fulfill the needs in this environment. So it is known as the एडजस्टमेंट, यानी कि इस कंडीशन में कोई इंडिविजुअल आप अपने आप को किस प्रकार एडजस्ट कर सकते हैं, किस प्रकार गवर्नमेंट्स की गाइडलाइंस को फॉलो अप कर सकते हैं, किस प्रकार आपकी लाइफ में जो डेली आने वाले चेंजेस हैं उनसे आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं या उनको फुलफिल कर सकते हैं। दैट इट इज द next one. So satisfactory adaptation to the demands of the day to day life. Next is the adjustment is the continuous process. Adjustment is a continuous process, we can say, because it starts from the birth until to the death. ये adjustment क्या है? ये birth से start होती है और till death तक ये complete चलती है। इंडिविजुअल अपनी लाइफ के डिफरेंट स्टेज में, चाहे वो आपका इन्फेंट्स हो, नेक्स्ट इज द टोडलर्स हो, टोडलर्स के बाद प्री स्कूल हो, उसके बाद स्कूल एज हो, उसके बाद एडोलसेंस हो, उसके बाद एडल्टहुड हो, या व्हाटएवर, इंडिविजुअल अपनी लाइफ के डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ डिफरेंट एरियाज में एडजस्ट करता रहता है। सो अकॉर्डिंग टू द नीड्स, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, इंडिविजुअल अपने आप को मॉडिफाई करता है, नीड्स को फुलफिल करता है, नीड को चेंजेस करता है, अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है, रिक्वायरमेंट्स के बेस पर अपने रेस्पॉन्स क्रिएट करता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? इट मींस कि एडजस्टमेंट इज द कंटीन्यूअस प्रोसेस, but it starts from the birth until to the death. Next is the adjustment is a two-way process. Adjustment is a two-way process, means individual adjust to himself and herself between the two circumstances. First is the individual, second is the environment. So but also the process of changing the circumstances of the one's need. So adjustment is the compromisations between the two extremities, यानी कि इंडिविजुअल जो एडजस्टमेंट होता क्या है, इसमें इंडिविजुअल किसी भी दो सिचुएशंस के बीच में, किसी भी एनवायरनमेंट्स के बीच में, सिचुएशंस के बीच में, नीड्स के बीच में अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। सो वी कैन से कि एडजस्टमेंट इज द two-way process. Next is the adjustment is the universal. It is universal, means adjustment is found in every environment, every situations, in every condition at every place. हर situations में, हर place में ये adjustment पाया जाता है। कोई सी भी सोसाइटी हो, कोई सा भी फील्ड हो, किसी भी सोशल लाइफ हो, whatever. So it is the universal. किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में एडजस्टमेंट हर जगह पाया जाता है, चाहे उसकी प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, कोई सी भी सोसाइटी हो, ईच एंड एवरीथिंग वी इंडिविजुअल एडजस्ट टू हिमसेल्फ एंड हरसेल्फ इन द अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, any society, any customs, religions, whatever. So it is the universal. Second is next is the it may be conscious and the unconscious activities. Individuals in the
For adjusting in the society, individual learns about the morals, tradition. किसी भी सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल है, वो वहाँ के ट्रेडिशंस के बारे में, कल्चर्स के बारे में, रिचुअल्स के बारे में, ट्रेंड्स के बारे में, इन सब चीज़ों को सीखता है. हम किसी भी सोसाइटी में जाते हैं, मे बी हम क्रिश्चियन सोसाइटी में जाते हैं, या मान लो हम किसी हिंदू सोसाइटी में जाते हैं, किसी मोहम्मदन सोसाइटीज में जाते हैं, एनी सोसाइटी, उस कंडीशन में हम वहाँ के कल्चर्स के बारे में, वहाँ के ट्रेंड्स के बारे में, वहाँ के रिचुअल्स के बारे में, इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं. इन सब के द्वारा इंडिविजुअल क्या होता है, उस सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट कर सकता है. सेकेंडरी थिंग इज द, it is the natural results of the tensions, problems, conflicts and the needs. When any individual is having the anxiety, stress, any conflicts, on that time adjustment process starts. So these all are about the nature of adjustment. I repeat it again. First nature is the, it is the harmonious relationship between the individual, environments, their needs. Second is the, it is the satisfactory adaptations to the demand of day-to-day life. Next, third is the adjustment is the continuous process. Next is the, it is a two-way process. Next is, it is the universal. Next, it may be conscious and the unconscious activities. Next is the, it is natural results of the tensions, problems, conflicts and needs. So these all are about the nature of adjustment. Now we will discuss about the aims of adjustment. There are some aims, those are necessary in the adjustment. First is the, first point, the first aim is to maintain the harmonious relationship between the environment, structural components of the society. Maintain the harmonious relationship between the structural components of the society. किसी भी सोसाइटी के जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं, वहाँ के कस्टम्स हैं, वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, वहाँ के रिचुअल्स हैं, वहाँ के ट्रेडिशंस हैं, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वहाँ की ग्रुप्स एक्टिविटीज हैं, so many things. So it is the main structure. In this condition, how to individual adjust, how to maintain the relationship, harmonious relationship in the that situation. So first aim is the to maintain the harmonious and the active relationship in the component of the society for the social reform and the social construction. Second aim is the social reform. किसी भी सोसाइटी के डेवलपमेंट्स के लिए, सोसाइटी कस्टम कंस्ट्रक्शंस के लिए adjustment is the necessary. Next is the for maintaining the harmonious social life. Next is the to provide good interpersonal relationship. From the adjustment, individual can maintain the good interpersonal relationship in the environment. Next is the develop social unity. Next is the perform functions effectively related to their culture, customs, values, and the belief. Next is the collective behavior in terms of the state, religion, economic agencies, whatever. So these all are about the aims of adjustment. Next is area of adjustment. We can say area, maybe we can say it is the component of adjustment. इसको एरिया भी कह सकते हैं, सब कंपोनेंट भी कह सकते हैं कि किन किन एरियाज में इंडिविजुअल अपने आप को एडजस्ट करता है. तो इन द फर्स्ट इज द पर्सनल एरियाज या पर्सनल कंपोनेंट, और सेकंड इज द एनवायरमेंटल कंपोनेंट. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द पर्सनल कंपोनेंट. सो अकॉर्डिंग टू द बेल, वी इंडिविजुअल एडजस्ट टू हिमसेल्फ. फर्स्ट इज द इन द इन्वेंट्री, यानी कि इन द गुड्स. सेकंड इज द इन द होम. इंडिविजुअल कहाँ कहाँ एडजस्ट करता है? इन्वेंट्रीज में. सेकंड इज द होम में, अपनी फैमिली में अपने आप को एडजस्ट कर सकता है. हेल्थ से रिलेटेड अपने आप को एडजस्टमेंट करता है. सोसाइटी, इकोनॉमिक कंडीशंस, इमोशंस और ऑक्यूपेशंस. These all are the areas in which individual, yes, human beings to adjust himself and the herself. I am repeat it again. It is the inventory, home, society, educational, sorry, occupational, emotional, and the social areas. Next is, according to the Arkoff 1968, individual adjusts to himself and the herself, maybe in the family, school, colleges, vocations, and next is the marriage. In this area, individual can adjust to himself and the herself. Next is the, according to the Joshi and the Pandey 1964, the areas of the adjustment are health. Next is the finance, living conditions, employment, relationship, sex, marriage, religious, home and family, future, vocationals,
educations, whatever, and the curriculum and the teaching. I am repeated again in the health, physical development, finance, living conditions, employment, marriage, moral, religious, homes and family, future, educational adjustment, and the adjustment in the curriculum and the teaching. Areas of the components means this that areas individual to adjust himself and the herself. एक चीज और है कि हर इंडिविजुअल को सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल सकती, कोई भी किसी भी सिचुएशन में है, चाहे उसका सोशल एस्पेक्ट हो, चाहे वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो, चाहे उसका फैमिलियल एस्पेक्ट हो, या वी कैन से ऑक्यूपेशन हो, एजुकेशन हो, कुरिकुलम्स हो, एनीथिंग। हर तो उस कंडीशन में क्या होता है, एवरी इंडिविजुअल इज हैविंग द नीड्स, मे बी द बायोलॉजिकल नीड्स, मे बी द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लव एंड सेल्फ स्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो उस नीड्स को फुलफिल करने के लिए इंडिविजुअल अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में एडजस्ट करता है। लाइक चाहे वो फैमिली है, सोसाइटी है, एजुकेशनल है, वोकेशनल है, मैरिज है, सेक्स है, रिलेशनशिप है, फ्यूचर है, व्हाटएवर। नेक्स्ट हेडिंग इज द measurement of adjustment. Measurements of the adjustment is by the testing techniques, by the projective techniques, sociometric techniques, scaling techniques, and the inventory techniques. First is the testing technique. Testing technique. In the testing techniques, it assesses the individual characteristics at the unconscious level. Through the various tests, we can adjust, we can know the adjustment level of the individual. So testing techniques. Second is the प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। सो इसके लिए हमने आपको पर्सनली में कुछ प्रोजेक्टिव टेस्ट बताए थे, जिसमें MPPI था, मिनासोटा मल्टीफेजिक इन्वेंट्री टेस्ट, इसके अलावा चाइल्ड एप्रिसिएप्शन टेस्ट, whatever, or such ink blot test. These all are the testing projective techniques. Next is the projective techniques is assess the individual characteristics. Next is the sociometric techniques. In the sociometric techniques, individual in the sociometric techniques. In the sociometric techniques, it is also necessary to measure the social relationship and provide the clue at the level of the social adjustment. इसके द्वारा कोई भी इंडिविजुअल अपनी सोशल रिलेशनशिप को, उसके इफेक्ट्स को जान सकते हैं, और वी कैन गेट सम क्लूज, सम आइडियाज फॉर नोइंग अबाउट द सोशल एडजस्टमेंट ऑफ द इंडिविजुअल इन द सोसाइटी, कि हाउ इंडिविजुअल इज एडजस्टिंग टू हिमसेल्फ एंड द हरसेल्फ इन द सोसाइटी। नेक्स्ट इज द स्केलिंग टेक्निक्स। स्केलिंग टेक्निक्स में क्या होता है, कुछ ओपिनियंस के द्वारा, व्यूज के द्वारा डाटा आर कलेक्टेड फ्रॉम सम पर्सन्स अबाउट द एडजस्टमेंट। इसके लिए अपन कह सकते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। स्केलिंग टेक्निक्स, स्केलिंग टेक्निक्स में क्या होता है, स्केलिंग टेक्निक्स इसमें हम एक मेथड्स यूज करते हैं, या कुछ क्वेश्चंस हैं, ओपन एंडेड मेथड्स है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस में हम क्वेश्चंस प्रकार से वर्क करते हैं। आज सोसाइटी के बारे में, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। हमने किसी अपने 2 या 3 इंडिविजुअल्स को लिया और हमने बताया कि आज सब्सटेंस अब्यूज के बारे में आपके क्या विचार हैं। तो इस प्रकार इंडिविजुअल गिव देयर ओपिनियंस, इंडिविजुअल गिव देयर हिज और हर ओपिनियंस कि सब्सटेंस अब्यूज क्या है, नशा क्या है, क्यों होता है। या फिर हम एक सेकंड क्वेश्चन पूरा कर सकते हैं, आज एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जो भी लार्ज मेटालिटी एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, इसमें किस मॉडिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट्स है। या अपन ये कह सकते हैं आज के समय में एजुकेशन पैटर्न्स में क्या चेंजेस होना चाहिए, या टीचिंग मैटर्स में क्या चेंज होना चाहिए। या वी कैन से अगर अपन मेडिकल फील्ड से बात करते हैं तो वी कैन आस्क फ्रॉम द पेशेंट्स कि व्हाट आर द केयर्स, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स वी कैन नर्स कैन फुलफिल, या कौन कौन सी नीड्स है जो नर्स के द्वारा फुलफिल की जा सकती हैं, या किस प्रकार से हम पेशेंट्स की केयर को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो इस कंडीशन में जो क्वेश्चन ओपिनियन पेशेंट्स के द्वारा दिया जाता है, इट इज नोन एज द ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में इसका क्या होता है, जो क्वेश्चन है वो यस और नो है। इसके अलावा क्या आप सोसाइटी में एडजस्ट कर पाते हो,
तो इंडिविजुअल कहेगा यस या नो, या वी कैन से इंडिविजुअल्स से हम ये पूछ सकते हैं कि हाँ आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, रिलेशनशिप कैसी है, कस्टम्स को फॉलो कर रहे हो या नहीं, ट्रेंड्स को आप एक्सेप्ट कर पाते हो या नहीं, क्वेश्चन। इसके अंदर भी हम कर सकते हैं रेटिंग स्केल तैयार कर सकते हैं। रेटिंग स्केल के अंदर क्या होता है कि हम इंडिविजुअल का इस प्रकार से ग्राफ तैयार करते हैं, जिसमें इस कंडीशन में क्या होता है कि इंडिविजुअल की सोसाइटी में किस प्रकार की रिलेशनशिप है, तो ये पुअर से स्टार्ट करते हैं और एक्सीलेंट तक इसको करते हैं। पुअर, एवरेज, गुड, वेरी गुड और लास्ट द एक्सीलेंट। फिर वी विल आस्क द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑफ द इंडिविजुअल, उसकी स्टैंड से लेकर, वैल्यूज से लेकर, कल्चर से रिलेटेड व्हाटएवर, और फिर उससे पूछते हैं कि हाउ on the behalf of it we can scaling techniques, we can know about the adjustment of the individual. Next is the inventory techniques. There are the many advantages of this techniques, we can all these things. So next is the characteristics of well adjusted. These all are about the measurements of, these all are about measurement of adjustment. Next heading is the methods of adjustment. Next is the characteristics of well-adjusted person. फर्स्ट इज द, जो भी इंडिविजुअल वेल एडजस्टेड होता है, ही नो हिज और हर कैपेबिलिटीज, उसको अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में, वीक पॉइंट्स के बारे में, लिमिटेशंस के बारे में, इन सब के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उसके वीक पॉइंट्स क्या हैं, उसकी एबिलिटीज क्या हैं, व्हाटएवर। सेकंड इज द, he has the self respect and respect of the other the individual. जो well adjusted person होता है वो अपने self respect के बारे में जानता है और he give the respect to the others. Next is the, he has the his level of the aspiration according to the strength and the ability. उसकी जो desires होती हैं, उसकी जो needs होती हैं, वो उसकी strength के according और उसकी abilities के according ही होती हैं. Next is the, he maintain to self esteem and the satisfaction of the basic needs. Well, he satisfy when the fulfillment of the basic needs. Next is the, he change the will and courage and fight the difficulties. वो अपनी wills को, will power को, courage को चेंज कर सकता है और जो भी डिफिकल्टीज होती हैं उनको फेस करके उनको शॉर्ट आउट करता है. नेक्स्ट इज द, he become flexible according to the needs, according to the requirements. He become flexible. फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है कि नीड्स के अकॉर्डिंग और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना, अपने वर्किंग पैटर्न को चेंज करना, अपने आइडियाज को चेंज करना, अपनी वर्क से रिलेटेड फिलॉसफी को चेंज करना. सो वेल एडजस्टेड पर्सन बिकम flexible. Next is the, he has a balance between the positive philosophy of the life. मैंने डेफिनेशन में ही बताया था कि एडजस्टमेंट क्या है. एडजस्टमेंट इज द interactions, adjustment in the process in which individual maintain the balance between the situations, between the different situations and the need of the life. यानी कि इंडिविजुअल लाइफ की डिफरेंट सिचुएशंस के बीच में और नीड्स के बीच में जब अपने आप को बैलेंस करके चलता है तो इट इज नोन एज द एडजस्टमेंट. सो मैं यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया कि इंडिविजुअल इज हैविंग द बैलेंस इन द फिलॉसफी ऑफ द लाइफ, यानी कि उसकी लाइफ की जो भी फिलॉसफी है, एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके गोल्स हैं, उसकी लाइफ है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, ऑक्यूपेशनल लाइफ हो या वोकेशनल लाइफ हो, व्हाटएवर, उन सब के बीच में पॉजिटिव फिलॉसफी बनाकर रखता है. नेक्स्ट इज द, फील सेटिस्फाइड विद हिज सराउंडिंग्स. व्हाटएवर थिंग्स ही इज हैविंग इन द सराउंडिंग्स, मे बी द रिलेशनशिप, मे बी द सोसाइटी, मे बी द पीपल्स, मे बी द फ्रेंड्स, मे बी द फैमिली, एनीथिंग्स. तो ही ट्राई to satisfy, he satisfy from their surroundings. Next is the, he has understanding and perceptions of the world. He always plan, thinking and act. वह he is having the perceptions about the world. वह
एनवायरमेंट्स के बारे में एक प्रॉपर रूप से परसेप्शन रखता है और वह प्लान्स करता है, एक्टिविटीज करता है, उसके बारे में थिंक करता है रिलेटेड टू द फ्यूचर. सो दीज ऑल आर अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ well adjusted person. I am repeated again. First is the he know strength, capabilities, weakness and the limitations. Second is the he has self respect and respect of the others. Next is the his level of desires according to the strengths and the knowledge, the abilities. Next is the he maintain the harmonious relationship between the basic needs and the environments. Next is the he has the positive philosophy for the life. Next is the satisfy from their surroundings. Next is the control over his environments, whatever. Next is the face the situations, and next is the he understand and perception about the world, and he always plan and think about the particular situation. So these all are about the characteristics of well adjusted person. So I summarize my topic. So I told in the adjustment we discuss about the introductions, definitions. In the definition I told you interaction is the universal process that means individual try to maintain the relationship between the needs and the environments. Next is the nature of the adjustments. In the nature of the adjustment, I told you it is the universal, it is the continuous process, it is the two-way process, it is maintaining the harmonious relationship between the environments and self. Next is that it fulfills the day-to-day demands of the life. Next is that it may be conscious and the unconscious activities. Next is the areas of components. In the areas of the components, according to the Arkoff, Pandey, and so these are the and Bell family, vocational, sex, marriage, educational, occupational, curriculum, customs, whatever. Next is the measurement of the adjustment. The measurement of the adjustment is done in the through the testing techniques, comma, skilling techniques, inventory techniques, sociometric techniques, projective techniques, whatever. And last about the characteristics of the well-adjusted person. तो इसमें क्या होता है, वो अपनी लिमिटेशंस के बारे में जानता है, आइडियाज के बारे में जानता है, लाइफ की फिलोसफी के बारे में जानता है. इसके अलावा वो अपने वीक पॉइंट्स के बारे में जानता है, वह लाइफ की सिचुएशंस को फेस करता है, वह अपनी डे टू डे लाइफ के बारे में प्लान करता है, व्हाटएवर. सो दिस ऑल आर अबाउट द characteristics of the well-adjusted person. Thank you. Thank you.